Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Gopal Krishna Krishna Kali Prabhupada Satyam Prashanti Vicharam Krishna Prabhupada Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavati Paschatya Deshatarine Om Ajnana Timirandasya Kyanangana Salakaya Chakshura Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurung Vaisnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Gunatanditam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhano Sute Devi Pranamami Vancha kalpatarubhyascha kipa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, Chapter 4, Instructions by Maharaj. Canto 4, Instructions by Maharaj Prithu. That's chapter 21, text 43. Hare Krishna, Lord Srimad Bhagavatam, Chatur Sevan, Chatur Ashan Vilpati, Adhyay 21, Maharaj Prithu का उपदेश, इसमें श्लोक संख्या 43 का पाठ करें. Tesam aham pada sarojarenu Tesam aham pada sarojarenu Arya vayedhi kiritam ayu Arya vayedhi kiritam ayu Yam nityada vivrata ashupapam Yam nityada vivrata ashupapam Nasyati amum sarvaguna bhajanti Tesam aham pada sarojarenu Arya vahiyadi kiritam
Kiritam Ayu Yam Nityada Vibrata Asupapam Nasyati Amung Sabaguna Bhajanti Samaham Pad Sarojarenum Arya Vahyadi Tamayu Nityada Viprita Shupapam Nasyatyam Sarvaguna Bhajanti Mataji. Arya Bhaya Kiritam Ayu Nasyati Amum Sarvaguna Bhajanti Esam Pada Sarojarenum Arya Bhaya Kiritam Ayu Yam Nityada Viprata Asupapam Nasyati Amung Sarvaguna Bhajanti Esam Pada Sarojarenum Arya Bhaya Kiritam Ayu Nam Nityada Viprata Asupapam Nasyati Amung Sarvaguna Bhajanti. Word for word meaning, they sound of all of them. Aham, I, Pada, feet, Saroja, lotus, Renu, dust, Arya, all respectable persons, Vahiya, shall bear, Adhi, up to, Kiritam, helmet, Ayu, up to the end of life, Yam, which, Nityada, always, Bibrata, carrying, Ashu, very soon,
papam. Sinful activities, nashyati, are vanquished. Among all those, sarvagunaha, fully qualified, bhajanti, worship. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. All respectable personalities present here, I beg the blessings of all of you that I may perpetually carry on my crown, the dust of the lotus feet of such brahmanas and Vaishnavas, until the end of my life. He who can carry such dust on his head is very soon relieved of all the reactions which arise from sinful life, and eventually he develops all qualities and desirable qualities. And he developed all good and desirable qualities. You gonna translate that? अनुवाद स्वीकार है। यहाँ पर समुपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि धारण करता हूँ। जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है, वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. It is said that one who has unflinching faith in the Supreme Personality of Godhead, which means unflinching faith in the Vaishnava or the pure devotee of the Supreme Lord, develops all the good qualities of demigods. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvai gunais tatra samashati shura. Chapter 5, text 12 of the 18th chapter, Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj also said, Na isang matish tavat urukramangrim. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, text 32. Unless one takes the dust of the lotus feet of pure Vaishnava on one's head, one cannot understand what the Supreme Personality of Godhead is. And unless one knows the Supreme Personality of Godhead, one's life remains imperfect. A great turn off or put your phone on airplane mode or put it in the silent. If your phone get off, you have to sponsor the next Sunday feast. Again, purport. Prahlad Maharaj also said, Naisang matish tavat urukramangrim. 7th Canto, Chapter 5, text 32. Unless one takes the dust of the lotus feet of a pure Vaishnava on one's head, one cannot understand what the Supreme Personality of Godhead is. And unless one knows the Supreme Personality of Godhead, one's life remains imperfect. A great soul who has fully surrendered to the Supreme Lord after understanding Him fully and after repeatedly undergoing austerities and penances for many, many lives is very rare. The crown of a king is simply a big load if the king or head of the state does not actually bear the dust of the lotus feet of Brahmanas and Vaishnavas. In other words, if a liberal king like Prithu Maharaj does not follow the instructions of Brahmanas and Vaishnavas, or does not follow the Brahminical culture, he is simply a burden on the state, for he cannot benefit the citizens.
Maharaj Prithu is the perfect example of an ideal chief executive. तात्पर्य कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर जिसकी अटूट श्रद्धा होती है, अर्थात जो श्री भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में अटल श्रद्धा रखता है, उसमें देवताओं के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचित सर्वे निस्तर्थ समास्ते सुरा श्रीमद् भागवतम 5:18। प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, नैषं मतिस्तावत् गुरु क्रमांग भागवतम 7:5-32। जब तक विशुद्ध वैष्णव के चरण कमलों की रेणु को मस्तक पर धारण नहीं किया जाता और जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान नहीं होता, तब तक यह जीवन अधूरा रहता है। ऐसा महापुरुष बिरला ही है जिसने श्री भगवान को पूरी तरह जान लेने के बाद तथा अनेकानेक जन्मों तक कठिन तपस्या करने के बाद अपने आप को उनमें पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। राजा के सिर पर मुकुट भार हो जाता है यदि राजा अथवा राज्य का प्रमुख ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूलि को उस पर धारण नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि महाराज पृथु जैसा उदार राजा ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आदेशों का अनुसरण नहीं करता अथवा ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करता, तो वह राज्य पर भार हो जाता है, क्योंकि वह प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। महाराज पृथु आदर्श शासक के एक उत्तम उदाहरण है। तेषां अहं पादसरोजरेणुं अर्याबह्यादिकिरीटम् आयु यं नित्यदा बिभ्रत आशु पापं नश्याति यमुं सर्वगुणा भजन्ति। O respectful personalities present here, I beg the blessings of all of you that I may perpetually carry on my crown the dust of the lotus feet of such brahmanas and Vaishnavas until the end of my life. He who can carry such dust on his head is very soon relieved of all the reactions which arise from sinful life, and eventually he develops all good and desirable qualities. So Prithu Maharaj is speaking here, and he is glorifying the Vaishnavas. And the Brahmanas as well. But not necessarily a Brahmana is a Vaishnava. Vaishnavas automatically they are Brahmanas. And in the previous verse also, the Brahmanas, genuine Brahmanas, who are devotees of the Lord, it is described what are their qualities. So Prithu Maharaj is the ideal monarch. Prithu Maharaj is a Satyavash avatar. There are 6 types of avatars. Avatar means one who descends from the spiritual world going to the material world. An avatar can be a Vishnu Tattva and also can be a Jiva Tattva. There is the Purusha avatar, Leela avatar, Guna avatar, Manvantar avatar, Shakchavesh avatar. Yes, we missed one. Yuga, yes, Yuga avatar, like Lord Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga, yes. Purusha avatar, Guna avatar, Leela avatar, Shaktavesh avatar, Yuga avatar. You missed that one. Yes, so
Prithu Maharaj is in the Jiva Tattva category, तो पृथु महाराज जीव तत्व श्रेणी में आते हैं, but he was very powerful. परंतु बहुत शक्तिशाली थे। He's the son of King Vina. तो वेद के पुत्र थे, King Vina is the son of King Anga. अंग के पुत्र थे वेद और वेद के पुत्र थे। And King Vina is very, very bad as a son. Even when he was a young boy, when he does not like his friend, he will kill his friend. तो वेद हैं बहुत ही बुरे व्यक्ति थे, बहुत ही बुरे राजा थे, युवक के रूप में बहुत बुरे थे, बस मित्र सिर्फ कोई भी अच्छा नहीं करता तो उसको मार डालते थे। It is very cruel. तो बहुत ही Cruel, yeah. So what the Brahmanas did is that they utter some mantras for Vina to be killed. तो ब्राह्मणों ने कुछ मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से वेद को मार दिया। And from came out Prithu Maharaj. और फिर पृथु महाराज का प्रकट हुआ। Now this happened in many yugas before, millions and millions of years ago. तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ, कई युगों पहले हुआ है। Prithu Maharaj is the ideal leader. पृथु महाराज आदर्श नायक हैं। His pastime specifically mentioned in the 4th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 15 to 23. तो भागवत के चौथे स्कंद में 15 से 23 अध्याय के बीच में पृथु महाराज का वर्णन किया गया है। Yes, so let's first describe who is Prithu Maharaj. तो पहले पृथु महाराज कौन है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। Yeah, he's an ideal king or an ideal leader is supposed to be representative of the Supreme Personality of Godhead. तो पृथु महाराज एक आदर्श नेता या राजा या नायक है, इसका मतलब हुआ कि भगवान के प्रतिनिधि। Or one may say also that anyone who is a leader should know the science of God. या ये भी कहा जा सकता है कि जो भी कहीं पर भी नेता की भूमिका निभाता है उसको भगवत विज्ञान बताना चाहिए। Yeah, it says that one should not be a king, one should not be a teacher, one should not be a parent, one should not be a spiritual master if he cannot release his subjects from the cycle of repeated birth and death. तो कहा जाता है किसी को नेता नहीं होना चाहिए, किसी को शिक्षक नहीं होना चाहिए, किसी को गुरु नहीं होना चाहिए, यदि उनके ऊपर जो निर्भर है उनको जन्म के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते। A real leader is actually a servant of his subjects. जो वास्तविक नेता है या नायक है वो वास्तव में सेवा करने का जाता है। So in the 20th chapter of this same canto, तो इस स्कंद के 20वें अध्याय में text 4:20-24, Prithu Maharaj says, I am the servant of the Brahmanas and Vaishnavas. See if you can find it. 4:20-24. Yes? I am the servant of the Brahmanas and Vaishnavas. Whatever wealth, land, or strength I have, I will use only in the service of the Lord. Is that correct? No? Not really? What does it say there? This is a prayer to Supreme Lord. 4:20-24. But in any case, don't quote it, but just repeat what I said. I am the servant of the Brahmanas and Vaishnavas. Whatever wealth, land, or strength I have, I will use only in the service of the Lord. So the king, he doesn't see himself as the main proprietor. He's only like a caretaker. तो जो नेता है या राजा है वो केवल एक
केयरटेकर है, अपने को मालिक नहीं समझता हो। Yes. He's a caretaker on behalf of Krishna. वो कृष्ण के बिहाफ पर केयरटेकर है। He's accountable to the citizens. तो जिम्मेदार है प्रजा के प्रति। He's responsible for his people, for them to be Krishna conscious. उसका उत्तरदायित्व है कि जो उसकी प्रजा है वो कृष्ण भावना वाले हो। Actually, there are two duties of the king: वास्तव में राजा या नेता के दो कर्तव्य हैं, to protect and to make sure that the citizens are Krishna conscious. पहला सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा ये ध्यान रखना कि वो सब कृष्ण भावना वाले हो। Do we see that these days? क्या वो आज के ज़माने में देख पाते हैं? Even in India? Maybe 50-50? No, not even 50-50. कहीं पर नहीं देख पाते आज के ज़माने में, भारत में भी कम है। Nowhere in the whole world that this is being executed. पूरे संसार में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर ये दो कर्तव्य राजा या नेता निभा रहे हैं। No. It says in the Srimad Bhagavatam, in the symptoms of Kali, that the present, the kings in the future, that means now, they'll be the one who will be what you call modern day thieves. They will take the money of the people. तो भागवत में जो पहले के लक्षणों में बताया गया है, भविष्यवाणी की गई है, यानी आज के समय के बारे में बताया है, तो बताया जो नेता हैं वो वास्तव में चोर होंगे, चोर करके होंगे, दूसरों का पैसा धन लूट लेंगे। Remember before Modi did this demonetization? Yes? It's crores and crores of rupees of some big politicians. You can see them in the walls. You know, when they took the walls off, you can see all. Now, no more what? Those 2,000 rupees is gone. Yeah? Is there 1,000 rupees now? No more. Huh? 500. But before there were 2,000 rupees, and there's 1,000 rupees also before, right? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कई बड़े-बड़े नेता पकड़े गए, उनकी दीवारों को हटाया गया, तो हमने नोटों से प्रिंट की, तो 2000 खत्म हो गए, 500 रुपए। Yes. During King Prith's time, it says that if one does not want to die, he will not die. ऐसा कहा गया है कि पृथु महाराज का जब राज्य था, तो अगर कोई चाहता है मेरी मृत्यु नहीं हो, उसकी मृत्यु नहीं होगी। Nowadays, there are more hospitals rising up, being established, and the medicine actually makes you more sick. परंतु आज के ज़माने में हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं और दवाई आपको और अधिक बीमार कर देती है। So what to do? This is not being followed, isn't it? तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जो ये शास्त्र की वाणी है इसका पालन नहीं किया जा रहा। Especially the kings, the leaders of the society. Vedic culture means they have advisors, the brahmanas. तो वैदिक संस्कृति का मतलब हुआ जो राजा हैं, नेता हैं, नायक हैं, उनके पास एडवाइजर होने चाहिए। Yeah, the kings or the leaders, they're being always counseled by these brahmanas, Vaishnavas. तो जो राजा हैं वो हमेशा गाइडेंस से काउंसिल लेते हैं ब्राह्मणों में वैष्णव। They don't act independently. Besides, if they act, it's only according to the Shastra. तो वो सलाह लेते हैं, शास्त्रों की सलाह लेते हैं या भक्तों वैष्णव की ब्राह्मणों की सलाह लेते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करते। They never allow their ego to dictate their decisions. तो कभी भी जो उनका डिसीजन है वो उनके मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता। It says a good example, the best example for all the citizens. तो उससे सारी प्रजा के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत होता है। Respect is not being demanded, but respect is being commanded, because out of his humility, first of all, the leader has to be humble, truthful, merciful, and he's equal to everyone. तो जब नेता विनम्र होता है, सत्यवादी होता है, सत्य के समान भाव रखता है, तो उसको आदर स्वतः ही मिलता है
उसको आदर मांगना नहीं पड़ता, डिमांड नहीं करना पड़ता। And therefore he is being respected by everybody. और इसीलिए ऐसे गुण होने के कारण उसको स्वतः ही आदर मिलता है। Nowadays, the citizens, they will elect the leaders and then they will disrespect him. तो आज के जमाने में जो प्रजा है वो मिलकर ही चयन करती है नेता का, और फिर उसके बाद नेता का ही निरादर करती है। They will say many ill words and names against the leaders. और फिर इन नेताओं के लिए वो कई गलत शब्द यूज करते हैं। That is not in the case of Prithu Maharaj. He's very popular. Everyone likes him. परंतु पृथु महाराज के केस में ऐसा नहीं था, वो बहुत लोकप्रिय थे, सब लोग उनको बहुत चाहते थे। So now, that is King Prithu. And to set a good example, he is willing to smear his crown by the dust coming from the lotus feet of the Vaishnavas and Brahmanas. तो ये है पृथु महाराज, और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो उनका मुकुट है वो भक्तों या वैष्णव की चरण धूलि उसके ऊपर ले रहे हैं। He gave so much importance towards the Brahmanas and the Vaishnavas. इतना भी महत्व दे रहे हैं वो ब्राह्मण या वैष्णव को। Because in the purport, as we've read, let us read it again. He has, you see, Prithu Maharaj's unflinching faith towards the Supreme Lord, and to show that unflinching faith towards the Supreme Lord, he cannot do that directly. He has to do it towards the Brahmanas and the Vaishnavas. तो जैसे कि तात्पर्य में प्रभु जी बता रहे हैं, जो पृथु महाराज हैं उनकी अटूट श्रद्धा है वो पुरुषोत्तम श्री भगवान के प्रति, परंतु भगवान के प्रति सीधा नहीं दिखाया जा सकता। तो भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होगी अगर ब्राह्मणों और वैष्णव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो कि अटूट श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं पृथु महाराज। Unflinching faith. Prabhupada used the word unflinching faith unto the Vaishnavas and to the Supreme Lord. तो श्री रूपा जी शब्द प्रयोग करते हैं, पृथु महाराज की अटूट श्रद्धा है वैष्णवों के प्रति और भगवान के प्रति। It says in the Srimad Bhagavatam, Acharyamang vijaniyam naya manyeta navam manyeta karhichit. One should know the Acharya to be as good as myself and never disrespect him. तो जैसा कि कहा गया है, भगवान बोलते हैं कि आचार्य को मुझे ही समझना चाहिए और कभी भी उनका निरादर नहीं होना चाहिए। An Acharya means he sets an example. He's the best example, and through his activities, he sets the best example. Like our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. आचार्य का मतलब एक आदर्श व्यक्तित्व और अपने व्यवहार के साथ वो आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद। Like the spiritual master is also representative, pure representative of the Supreme Lord. और जो हमारे गुरु हैं वो भी पूर्ण भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। So if we give, and this is the proper etiquette, that we should give the same respect towards the spiritual master as the same respect as we give towards the Supreme Lord. तो ये सदाचार है, हमें गुरु के प्रति वही आदर देना चाहिए जो कि भगवान के प्रति किया जाता है। This is the importance of worship and respect towards the Brahmanas and the Vaishnavas. तो ये महिमा है ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति आदर देने। Narottam Das Thakur says, Chadiya Vaishnava Sheva Nistara Payeche Keva. Without serving the Vaishnavas, no one will be ever been delivered. No one can be delivered. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भजन में कि कोई मुक्त हो ही नहीं सकता जब तक कि वैष्णव या ब्राह्मण को पूरा आनंद नहीं देगा। Unflinching faith means nistha, like fixed. अटूट श्रद्धा का अर्थ है निष्ठा, परिपक्व। Unflinching faith in the Vaishnavas means accept their words, वैष्णव में अटूट श्रद्धा का अर्थ हुआ उनके शब्दों को स्वीकार करना, take their guidance, उनका
मार्गदर्शनेन and their blessings as directly representing Krishna's will. और उनका उनका आशीर्वाद लेना जो कि प्रतिनिधि है भगवान की इच्छा है। Prabhupada says if one serves the Vaishnavas, that means he is also serving Krishna. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई वैष्णव की सेवा करता है तो इसका अर्थ वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। What is that? Krishna eats through the mouth of the Brahmanas. तो कृष्ण खाते भी हैं ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से। If one offends a Vaishnava, he offends Krishna. अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो कृष्ण के प्रति अपराध करता है। How is that? Because कैसे हुआ? within the heart of Lord Krishna, the Vaishnava resides, and within the heart of the Vaishnava, Krishna resides. इसलिए हुआ क्योंकि कृष्ण के हृदय के अंदर वैष्णव रहते हैं और वैष्णव के हृदय में कृष्ण रहते हैं। So Prabhupada says, yes, this is the secret of success when we serve the Vaishnavas, because we cannot serve Krishna directly. तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही है सफलता का रहस्य वैष्णव सेवा क्योंकि कृष्ण की सेवा आप सीधा नहीं कर सकते। So we serve Krishna through the devotees. तो कृष्ण की सेवा करते हैं भक्तों के माध्यम से। Our Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, he often stresses Krishna sees how we deal with his devotees more than how many rounds we chant. तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण ये देखते हैं कि हम भक्तों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, बजाय इसके कि हम किसी माला करें। That means that if our chanting is there, like say 1 lakh names of the Lord, but then if we offend the devotees of the Lord, that 1 lakh doesn't have any value. जैसे अगर कोई 1 लाख नाम जप करता है परंतु साथ के साथ वैष्णव अपराध करता है तो उस 1 लाख नाम जप का कुछ लाभ नहीं होता है। Yasha prasada Bhagavat prasado Yasha aprasada nagati katopi. So without pleasing his devotees, the spiritual master, the Vaishnavas, the Brahmanas, then we cannot please Krishna. तो गुरु वैष्णव ब्राह्मण को प्रसन्न किए बिना हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। So it does not matter how many rounds we chant. Krishna sees more how we deal with other devotees. तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने कितनी बार का जप किया। कृष्ण ये देखते हैं कि हमने भक्तों के साथ व्यवहार कैसा किया। And how is that? Because chanting, Guru Maharaj says, because chanting pleases Krishna, but serving his devotees pleases Krishna even more. गुरु महाराज कहते हैं ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, परंतु वैष्णव के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं तो कृष्ण और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। It's like, was that Lord Shiva says, one who says he's my devotee, he told this to Parvati, right? One who says he's my devotee, he's not my devotee. But one who says that he's a devotee of my devotee, he is my devotee. इसीलिए शिव जी भी यही कहते हैं कि भगवान ही कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो अपने को मेरा भक्त बोलता है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। So this is very important, especially we always seeking the shelter of the lotus feet of the Vaishnavas. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सदैव हम वैष्णवों पे शरण करें। Very often when one sees a sadhu, especially in India, they would want to touch his feet. भारत में बहुत आम है, साधारण है कि किसी साधु को देखते हैं तो उसके चरणों की तरफ सब लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं। And also, like, if the parents, they have their children along with them, they will tell the children, you touch the feet of the sadhu. और अगर माता पिता के साथ बच्चे भी होंगे तो माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि आप साधु में अपनी चरण छोड़ दीजिए। Why? क्यों? Because
the extension. Ultimately, we want to take shelter of the lotus feet of Lord Krishna. क्योंकि वास्तव में तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की शरण लेना चाहते हैं। But again, we cannot do that directly. So, being pure representative via media of the Supreme Lord, the sadhus, the spiritual master, the acharyas, when we touch their feet, it is as if we are touching the lotus feet of Lord Krishna. परंतु क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के पास सीधा नहीं जा सकते, तो इसलिए जो उनके शुद्ध प्रतिनिधि हैं, वैष्णव गुरु, जब उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, तो वैसा ही हुआ जैसा कि कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हैं। Prabhupada would often says, the lotus feet of Krishna are our only shelter. प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण हैं, वही एकमात्र आश्रय है हमारा। How is that? When we take shelter of Lord Krishna's lotus feet through his representatives, then all of our material problems will be solved. इससे क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं, वैष्णवों के आश्रय के माध्यम से, वैष्णव के श्री चरणों का आश्रय के माध्यम से, तो हमारी जितनी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। And for those who are materialist, when they touch the lotus feet of Vaishnava or Brahmana, then their spiritual life begins. और जो भौतिकवादी लोग हैं, जब वो वैष्णव के चरण स्पर्श करते हैं, तो उनका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। The devotees, they feel secure, they feel protected under the shelter of the lotus feet of the Lord. जो भक्त हैं, वो भगवान के श्री चरणों के आश्रय में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। So for us, fortunate are those who are pujaris, because they're able to touch the lotus feet of the Lord every day. जो पुजारी हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हर रोज भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं। It's like in India, they are considered to be the most intimate servants of the Supreme Lord, because directly they can serve the Lord on the altar. जिस भारत में पुजारी हैं, उनको भगवान का निकटतम भक्त माना जाता है, क्योंकि वो श्री विग्रह की सेवा रोज करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। But for us, how about us? We're very far. There's a distance. There is a distance between us and the Lord. But mentally, we can also touch the lotus feet of the Lord. Touch him to the head. परंतु हमारे भगवान के बीच में तो डिस्टेंस है, गैप है, फिर भी मानसिक रूप से भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। This is a spiritual mystery here. It's like in Radha Govinda temple in Jaipur, when the pujari offered the ghee lamp, the pujari will just show to the crowd, to the public, and everyone will be touching. Well, here we have to give like one by one, right? But in some temples, you don't get the ghee lamp directly to you and you touch, because touching that also is like being offered to the Lord, then you also touch the Lord. तो एक आध्यात्मिक मिस्ट्री है, जैसे जब आरती के बाद लैंप लेकर आ जाता है, तो हमारे मंदिर में तो लैंप हर एक के पास लेकर जाते हैं, और जब उस लैंप को हम उसकी अग्नि को लेते हैं, धारण करते हैं, तो उसके माध्यम से भगवान के चरणों को भी हमने स्पर्श किया। परंतु जैसे गोविंद राधा मंदिर है जयपुर में, जो और भी मंदिर है, वहाँ पर पुजारी आरती के बाद बस वही वाटर से ही लैंप सबको ऐसे दिखा देता है, और सब अपने सर पे खड़े खड़े अपने शीश में धारण कर देते हैं, तो मानसिक रूप से उसको ग्रहण कर लेते हैं। Prabhupada says, as soon as one takes shelter of the lotus feet of Krishna, Maya immediately loses her strength. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही कोई भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेता है, तो माया की शक्ति समाप्त हो जाती है। So, for those especially who are struggling, who is not struggling? तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, वास्तव में कौन संघर्ष नहीं कर रहा? We are all struggling, especially spiritually, materially, everyone.
Not everyone is struggling spiritually, that they recognize that they are struggling, but devotees, they know that they're struggling spiritually also. तो भौतिक रूप से तो हर कोई संघर्ष कर रहा है, पर आध्यात्मिक रूप से हम जानते हैं कि अंदर संघर्ष चल रहा है। So, anyone who takes shelter of the lotus feet of Krishna, Maya will immediately loses her strength. So we should pray every day unto the lotus feet of Lord Krishna. तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के शरणों में शरण लेता है, माया तत्क्षण उसे छोड़ देती है। इसलिए हमें हर रोज भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। Serving the lotus feet. You see, the lotus is the last most beautiful thing in the material world. तो कमल है वास्तव में भौतिक संसार में आखिरी सुंदर वस्तु है। And lotus means very soft. और कमल का अर्थ ये भी हुआ कि बहुत ही कोमल। Some of you, I'm sure, you had this privilege and opportunity to touch the lotus feet of Guru Maharaj. तो आप ऐसे कई भक्तों को अवसर मिला होगा गुरुनाथ के श्री चरणों को स्पर्श करने का। How many of you had that fortune? It was so soft, isn't it? It's like when you touch, it's like almost it's going to push. It's amazing how soft, real lotus, like lotus feet. इतने कोमल श्री चरण महाराज के थे। Not like mine or yours. Huh? Oh, you did? I don't know. But definitely, soft means like, see, the lotus also, the lotus, the insects, the bees, they also goes to the lotus flower because it's like a shelter. So the conditioned souls, the shelter of the conditioned souls are the lotus feet of the spiritual master and the Vaishnavas. तो कमल है वो आश्रय प्रदान करता है, मधुमक्खी कली उसमें आकर बैठती हैं। उसी तरह जो भौतिक संसार में भटके हुए जीव हैं, उनको जो गुरु के श्री चरण हैं, वो आश्रय प्रदान करते हैं। Now, taking shelter of the lotus feet of the Vaishnava means following their instructions. और वैष्णव की शरण कमल की शरण लेने का अर्थ हुआ उनकी आज्ञा का पालन करना। When someone says, Maharaj, please give me your blessings. कई बार भक्त बोलते हैं महाराज मुझे मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे आशीर्वाद दें। Now, the blessings of the spiritual master or the Vaishnavas will be there as long as we follow the instructions. तो आध्यात्मिक गुरु या वैष्णव का आशीर्वाद तब तक है जब तक हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। Yes. If we don't chant the Hare Krishna Maha Mantra, if we are not following the four regulative principles, if we are lazy in our spiritual practices, then how the blessings will work? अगर हम हरे कृष्ण नाम का जप नहीं कर रहे, अगर हम आलसी हैं आध्यात्मिक शिक्षाओं या आज्ञा का पालन करने के लिए, अगर हम चार नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो आशीर्वाद काम कैसे करेगा? Yes, we should not neglect. Oh, some shower of mercy here. Huh? The process will only work if we do our part. तो ये प्रणाली तभी कार्य करेगी अगर हम अपना कार्य करेंगे। That means that the mercy of the Lord through the pure representatives of the Supreme Lord will only work if we follow the instructions. इसका अर्थ हुआ भगवान की कृपा तभी कार्य करेगी यदि वैष्णव भगवान की कृपा जो वैष्णव की कृपा के माध्यम से आ रही है उनके आदेशों का पालन किया जाए। So Prabhupada says, the dust of the lotus feet of a pure devotee is necessary for advancement in bhakti. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त की जो चरण रेणु है वो भक्ति में अग्रसर होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। It's like before we embark to
do a major decision like service, we always ask blessings from the Vaishnavas. जैसे हम कोई बड़ी सेवा करने जा रहे हो, आरंभ कर रहे हो, तो पहले हम वैष्णव से कृपा याचना करते हैं। Just like in India, they touch the elderly, the feet, right, to get blessings. जैसे भारत में बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श किया जाता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। So similarly, the warriors, before, let's say, like there is a war, so before leaving home, they will get the blessings from the elderly, so that they will come back. उस तरह जब युद्ध होता है तो जो सेनानी हैं वो पहले अपने घर में बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते हैं ताकि युद्ध करने जा रहे हो ठीक ठाक पहुंच सकें। So Guru Maharaj says, lotus feet means mercy. तो गुरु महाराज कहते हैं चरण कमल का अर्थ हुआ कृपा। Before we can approach Krishna's lotus feet, we must first go through the lotus feet of the Guru and devotees. भगवान के चरण कमल के पास जाने से पहले हमें गुरु और वैष्णव के चरण कमल के पास। So this is why it is very important. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। By serving the lotus feet of the spiritual master, one becomes qualified to serve the lotus feet of Krishna. श्री गुरु के चरण कमल की सेवा करने के साथ योग्यता प्राप्त होती है श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने। This is from Guru Maharaj. He says that. गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं। Guru Maharaj says also that while chanting the Hare Krishna Maha Mantra in our Japamala, we should mentally visualize that we are also chanting, or while chanting the Hare Krishna Maha Mantra, and when we touch our Japamala, it is as if we are touching the lotus feet of Lord Krishna. वो ऐसे बोलते हैं जो माला का जप करते हैं तो हम जब माला को स्पर्श करते हैं तो हम उस पे मेडिटेट कर सकते हैं कि हम भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर रहे हैं। Our meditation should be, "Oh Lord, may my mind be fixed on your lotus feet. Please accept my service." और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि ओ भगवान आप मेरे पर कृपा करें कि मेरा जो मन है वो आपके श्री चरणों की शरण ले सके और कृपया मुझे सेवा में स्वीकार करें। So in this way, our mechanical chanting will be transformed into like heartfelt meditation of the holy name of the Lord. इस तरह जो हमारी मैकेनिकल चैंटिंग है वो हृदय के भावों से परिपूर्ण जप हो जाए। Guru Maharaj says, touching the lotus feet of a Vaishnava is not ritualistic. गुरु महाराज बोलते हैं कि वैष्णव के चरण कमल का स्पर्श एक रिचुअल नहीं है। Yeah, it is an act of humility. तो वैष्णव के चरण कमल का स्पर्श एक विनम्रता का प्रतीक है। In the material world, no one bows down. भौतिक संसार में कोई झुकता नहीं है। It's very rare to see someone bowing down. Of course, in Japan, this is the tradition. They will bow down half to the waist. Not like sometimes they offer obeisances to the Swamis, Dandavat Maharaj, and they're standing. So how can that? Dandavat means like a stick, right? So sometimes they say, Dandavat Maharaj. Dandavat, you have to do it. तो भौतिक संसार में बहुत दुर्लभ है झुकना। आज जापान में लोग आते हैं वो तो आधा झुक जाते हैं और कई बार हम वैष्णव में लिखते हैं कि हम हाथ जोड़ के बोलते हैं दंडवत महाराज। तो ऐसे कैसे दंडवत हम लंबी तरह गिनना चाहिए। You have to show it physically also. Like in the beginning of our movement, everyone was bowing down to Srila Prabhupada, the first center temple in New York, except one person. तो हमें फिजिकली भी झुकना चाहिए। तो जब हमारा शुरुआती दिन थे तो न्यूयॉर्क में सभी भक्तों ने प्रभुपाद जी को प्रणाम करते थे, बस एक भक्त नहीं करता। So Prabhupada noticed this and he did not say anything. तो प्रभुपाद ने देखा कि जो एक भक्त है ये प्रणाम नहीं करता। प्रभुपाद ने देखा पर कुछ कहा नहीं।
before Prabhupada enters the temple, it's a very small temple, it's very small, not even 1/3 of this temple, this 22nd Avenue. So before Prabhupada, he will enter, everyone will offer obeisances, and when after the class, the lecture, he leaves, then everyone offers obeisances. But there is this one newcomer, he's not offering any obeisances. तो ये नया मंदिर था, पहला मंदिर था इस्कॉन का। इस मंदिर में, इस मंदिर हॉल में एक है, इसका नहीं था, बहुत छोटा था। तो जब भी प्रभुपाद जैसे ही आते थे हॉल में, सब लोग झुककर प्रणाम करते थे, और फिर प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी जाते थे, सब लोग झुककर प्रणाम करते थे, पर एक जो व्यक्ति है वो प्रणाम नहीं करते, खड़ा रहता। So Prabhupada finally one day asked him, why are you not bowing down? तो प्रभुपाद जी ने आखिरकार एक दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम प्रणाम क्यों नहीं करते, तुम झुकते क्यों नहीं? Then the person says, Swamiji, I don't feel inside bowing down. तो उस व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी, मुझे अंदर से प्रेरणा नहीं मिलती, अंदर से भाव नहीं आता झुकने का। Prabhupada says, well, in the beginning, you may not feel. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि शुरुआत अवस्था में हो सकता है भाव ना आए, But when you do it physically, eventually you will feel it also. परंतु यदि तुम फिजिकली झुक के प्रणाम करते रहोगे तो फिर आखिरकार वो भाव भी आ जाएगा। Bowing down or touching the feet of a Vaishnava means you have to be humble. तो झुक के प्रणाम करना या वैष्णव के चरण कमल को स्पर्श करना, ये तभी हो पाएगा कि आप जन्म लें। Accepting your being lower in a sense that you need help, you need shelter, that's why you will do it, to bow down. इस बात को स्वीकार करना कि मेरा स्तर नीचे का है और मैं सहायता चाहता हूँ, तो फिर हम झुक के प्रणाम करें। So this is the mood of Prithu Maharaj. तो ये पृथु महाराज का मूड है। He understood that the Brahmanas and the Vaishnavas are the representative also of Lord Krishna. तो पृथु महाराज जानते थे कि ब्राह्मण और वैष्णव हैं वो भगवान के प्रतिनिधि। Brahmana iti Brahman. They know Brahman. They know Para-Brahman. तो ब्राह्मण जो है ब्रह्म को जानते हैं। Yes. And therefore, Prithu Maharaj, he understood the knowledge. He has knowledge that says here, if Prithu Maharaj also will not do it, setting an example, he's the ideal monarch, he's the ideal executive leader. And if he's not going to do that, even Lord Krishna, he was the lotus feet of Sudama Vipra. He is God. To show an example that Brahmanas and Vaishnavas, they're very, very exalted. तो पृथु महाराज इसलिए भी करते थे ब्राह्मणों वैष्णवों की सेवा और शरणों की सेवा, क्योंकि वो एक नेता है, तो उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं जब सुदामा है तो उनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। Queen Rukmini was surprised. How is this? रुक्मिणी देवी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो रहा है? Sudama Vipra came, like his clothes are all torn, have holes in them. He's very poor. सुदामा विप्र है तो उनके कपड़े फटे हुए थे, उसमें बड़े-बड़े छेद हुए थे। But he has love for Krishna. परंतु उनके हृदय में कृष्ण के प्रेम था। See, in the Dwarka Leela, Lord Krishna is a Satriya. तो द्वारका लीला में भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय हैं। He played the role of a Satriya. तो वहाँ पर भगवान ने एक क्षत्रिय का भूमिका निभाई। And to show the best example, yes, और आदर्श प्रस्तुत किया। I have to bow down to the Brahmanas. तो वहाँ पर ब्राह्मणों के सामने झुके। What's that? Sudra, Vaishya, what's that? Satriya, and then Brahmana. शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। So, yes, they're the best example. Prithu Maharaj, Lord Krishna himself,
in showing us how to respect the Vaishnavas and the Brahmanas. तो पृथु महाराज या कि भगवान श्री कृष्ण अपने उदाहरण से अपने आचरण से हमें समझा रहे हैं कि किस तरह हमें वैष्णवों के प्रति नतमस्तक होना चाहिए And to get the dust from their lotus feet. और उनके चरण कमल की रेणु जो है धूली है उदाहरण करने के लिए नतमस्तक के ऊपर Sometimes we've seen devotees, they try to touch each other's feet. You've seen that? एक दूसरे के चरणों के बीच भागते हैं You've seen that? Yes, they kind of like play around, who will touch each other's feet first. And they will go all over the temple trying to touch each other. Temple room trying to touch each other. Okay, well, don't do like that, okay? Sometimes they do that. It's like kind of play or something, game. Yes, Prabhupada says, because usually the sannyasis, they always want everyone try to touch their feet. Yeah, usually that is the case. But Prabhupada says, because see, when someone touches your feet, they take some of your credits. They take the austerities that you perform, the knowledge that you have about Krishna. It's like they taking some from you and they're giving their karma to you. तो साधारणतः सन्यासियों के चरण स्पर्श किया जाता है तो प्रभुपाद कहते हैं हम चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने से जिनका चरण को स्पर्श किया गया है उनकी तपस्या भगवत ज्ञान का कुछ हिस्सा चरण स्पर्श करने वाले जाता है और अपने कर्म को छोड़ जाता है So let's say if someone tries to touch your feet and there is no way to escape, that means just fold your hands and think of the parampara. कभी ऐसे हो जाए कि आपके कोई चरणों को छू रहा है और आप बच नहीं पा रहे तो उसी टाइम हाथ जोड़ लीजिए और परंपरा का स्मरण कीजिए. Because if one is not so strong and many sinful people touch your feet, you are going to get sick. You will suffer. क्योंकि यदि कोई आध्यात्मिक रूप का होना नहीं है और बहुत अधिक संख्या में कर्मी लोग हैं पापी लोग हैं आपके चरणों को छू रहे हैं तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे. Yes. When we touch Ganga, we're also like touching the lotus feet of Lord Vishnu. जब गंगा जी को स्पर्श करते हैं वो भी भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करने के समान है. Correct? Yes, because Lord Vamana's toe pierced the covering of the universe, and this is the cause why how Ganga flowed from the celestial sky. तो भगवान वामन के अंगूठे से छिद्र हुआ और उसके माध्यम से गंगा जी यहाँ पर भौतिक संसार में है. Vishnu Pada. Yes. We can talk more about lotus feet. Touching this is a very big subject. But the main thing is that we should try. Even we don't have to touch physically. We can, through our mind, we can touch the feet of the deities or touch the feet of Srila Prabhupada. Oh yes, there was this one last story. Big pandal. And Prabhupada was coming. So everyone was trying to touch his feet. So a disciple asked Srila Prabhupada, how come everyone loves you? It's a show of respect, it's a show of love also. When someone touches your feet, it's like saying, I love you, I respect you, I worship you. चरण स्पर्श का एक भाव ये भी है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं
आदर करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। But this isn't the case of the devotees. For the materialists, no. They just want their material desires to be fulfilled. That's why they're touching your feet. ऐसा वैष्णव के समुदाय में है, पर भौतिक संसार में चरण स्पर्श इसलिए करते हैं कि भौतिक इच्छा पूरी करना चाहते हैं। So Prabhupada was asked, how come everyone loves you? तो प्रभु ने पूछा, ऐसा कैसा है कि सब लोग आपको प्रेम करते हैं? Prabhupada replies, because I love everybody. क्योंकि तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि मैं सबको प्रेम करता हूँ। Srila Prabhupada ke? Any questions? Any comments? Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Can you please tell something about wearing slippers of other person? Oh yes. If you wear the slippers, there's a lot of them thieves, because they will sell, they will take. It's like in Vrindavan, there is a record that if you want to lose your slippers, go to the ISKCON temple. प्रश्न है कि महाराज जी आपने चरण स्पर्श का बताया, तो दूसरों की चप्पल पहनने के बारे में बताइए। तो मैंने कहा कि हाँ, कई लोग हैं जो चप्पल चुराते हैं, तो अगर चप्पल खोनी है तो इसको There is no shastra praman into this, but it says that also you share the karma. ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण तो नहीं है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि दूसरी की चप्पल पहनने से उसका कर्म लेते हैं। It's like in the mandir, ISKCON temple, we usually keep the visitors' chapal in a shoe stall, but devotees they wear shoes, right? They wear chapal, so because they have to go to the latrine, and they will say, oh, chapal there, let me use this. So there is. It says like that. And if you lose, if someone steals your chapal, then your karma also is lesser. It becomes lessened. The shoes, the chapal of the spiritual master is worshipable. Yeah. And we don't. Paduka, yeah. And you don't use them. There are three items actually that very powerful: the Mahaprasad, the lotus feet, and lotus feet of the spiritual master, and the tadiyas, the items that the spiritual master used. So we don't use the spiritual master's items. They are worshipable. One time we were traveling. It was like maybe the first time I traveled with Guru Maharaj, and I did not bring any sweater. It was so cold on the plane. So Guru Maharaj let me use his sweater. And also, if the spiritual master gives you some of his belongings, let's say as a gift, you can use that while he's still around. But as soon as he departs, that is no, you cannot use that anymore. That is worshipable now. Yeah. तो श्री गुरु के जो महाप्रसाद है, उनके चरण कमल हैं, और तदीय वस्तु, उनके प्रयोग में पदार्थ हैं, उनको अपने प्रयोग में नहीं करना चाहिए, सेल्फ यूज, अपने यूज अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी गुरु अपने यूज की चीज आपको स्वतः दे दें, तो फिर उसको आप धारण कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पर तब तक जब तक गुरु फिजिकल फॉर्म में आता है, पर जब गुरु अगर हो जाए, तो फिर उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो हमारा बताने की बात है, शायद पहली बार जब गुरु महाराज से ट्रैवल कर रहा था, बहुत ठंड थी, तो फिर गुरु महाराज ने अपना स्वेटर मुझे दिया और मैंने उसे पहना। Yes. So don't use others' chapal.
दूसरों की चप्पल यूज मत करिए। That's why in Vrindavan it's better you don't use any chapal, so you don't lose them. तो इसलिए वृंदावन सबसे अच्छा है, और चप्पल यूज नहीं करते, वही नहीं। You have any experience losing your chapal here in Faridabad? Yes? Sometimes? More inside ashram than outside. More inside the ashram than outside. Hey, you have a question? Go ahead. जैसे हमारे दादा दादी है या हमारे पेरेंट्स को पूजनीय व्यक्ति जो भी है वो भक्ति का कृष्ण भक्ति करते हैं, कभी कभी देवी देवता को मिलने जाते हैं, हमारे भक्त जो भी है, लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके चरण छूते हैं, तो उनका जो भी कमाई वगैरह हो है तो वो हम पे आ जाते हैं, तो उसको बचेगा तो क्या हम उसके हित के लिए उसका अच्छे के लिए हम जब छुए ना छुए के कंफ्यूजन से नहीं आता है। And the question is sometimes some elderly relatives, they are demigod worshippers. They're demigod worshippers. Not similar to Krishna, but we are connected to the Supreme Lord and ISKCON. But out of respect, we worship them and we touch their feet also. So, but that also means they're taking karma. So that will be harmful for us. Proper etiquette, it doesn't matter. They're still worshipable because they're seniors. Like Prahlad Maharaj is very respectful, my dear king of the demons. लेकिन सदाचार का पालन करना है क्योंकि वो हमसे वरिष्ठ हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद महाराज वो पिताजी को बोलते हैं, ओ असुरों में सर्वश्रेष्ठ। Yes, this is etiquette, this is Vedic culture. That the elders, seniors, you give respect. It doesn't matter whether they're materialists or devata worshippers. No, the respect should be there. तो जो आयु में बड़े हैं उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि ये वैदिक संस्कृति है। ये अंतर नहीं पड़ता कि वो भगवान के उपासक हैं या देवी के उपासक हैं। If you think ill of them, then how can you give respect to anyone? That's the formula of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु में फॉर्मूला नहीं है। अगर हम किसी के बारे में ऐसे देखेंगे तो हम किसी को आदर नहीं कैसे पाएंगे? Amanena manadena. One should be ready to offer respect to everyone and not expect any respect to yourself. Then you can continuously chant the holy name of the Lord. महाप्रभु का फॉर्मूला है कि सदैव दूसरों को आदर देना और कभी अपने लिए आदर की कामना ना करना, तब वास्तव में हरि नाम का जप कर पाएंगे। Yes. You need the blessings of your relatives, your parents, even if they're non-devotees. आपके माता पिता हैं, आपके परिवार के वरिष्ठ जन हैं, तो उनका आशीर्वाद चाहिए, हालांकि भक्त ना भी। Right? Any other points? Okay, last 3 and 4 and 5 and 6 and 7. No. Those who raise their hands right now, you can ask the question. Otherwise, no more after this. 1, 2, 3, 4. Huh? One, right on the right. 1. Oh, I didn't see it. 5. You mentioned that regarding Microphone, put the microphone like this. you mentioned that our decision should not be based on our ego. Yes, of course. So how to figure out the decision or the thinking that we are making? If it's favorable for Krishna, it is not your ego. Right now, it's false ego. There is a real ego. The real ego means I'm a servant of Krishna. So everything that I do for Krishna's pleasure, for Vaishnava's pleasure, that is real ego. If my decision is for my own pleasure, for my own benefit, if I am to gain first, no, don't listen to that. अगर गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए है, तो वो सही अभिमान है, परंतु यदि अपनी इच्छा के लिए है,
तो मिथ्या अहंकार से प्रेरित है। मालूम है? Okay. Prabhuji, here's a question right here. Can I ask the question then Vyasuda? Huh? Question yes in Vyasuda. What about it? He's saying that can he ask question about Okay. Mm-hmm. Full of. Go ahead. There is sound. We can hear you. We can hear you. Humility and gratitude. Mm-hmm. They are written that and how to accept the instruction of the spiritual master. How you regulate your behavior or emotions when you are your spiritual master's instruction. Well, we have to accept that I don't know anything, and the spiritual knows myself more than me. He can see through. It's like a genuine spiritual master can see the heart of the disciple. He doesn't see external, he sees inside. External is deceiving. So when he sees inside and you realize that, hey, I cannot hide anything from Guru, therefore I have to follow whatever he says for my purification. Yeah, but every moment, how you follow the instruction of the spiritual master to regulate your behavior. Always think that Guru is always with you. Prabhupada says, I never feel any separation from my spiritual master. When you say that means Guru is always with you. He says also when he was in New York, I feel separation from Vrindavan. Now, when you feel separation from Vrindavan, that means you are in Vrindavan. If you don't feel separation, that means you are very far away. So, based on this, there is a code by Guru Maharaj. What's that? Code by Guru Maharaj. That any body cannot be separated from the soul, and disciple cannot be separated from the instruction of the spiritual master. Mm-hmm. Can you elaborate? As well, the body, the soul will be separated from the body anyway at the time of death. So it's the same thing. If you're always following the instructions of Guru, then you're always with Guru. The moment you disobey his instructions, that means Hare Krishna is not there. You will only will be protected from Maya as long as you keep on following the instructions of the spiritual master. It's not possible. As soon as you turn into Maya, that means the mercy of the spiritual master also is always there, but it's like you going away, being separated from him. You understand now? Yes? Hanji? Okay. You want to translate whatever in a short, summarize? तो प्रश्न की महाराज जी हकीकत बहुत ही सुंदर राजपूजा ऑफिस थी, तो ऐसा भाव कैसे धारण करें? तो उन्होंने बताया कि एक तो सदैव अपने आप को अधम मानना कि गुरु के सामने मैं सदैव अधम हूँ, बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। दूसरा, गुरु सब कुछ जानते हैं, ना केवल बाहरी परंतु वास्तव में अंदर जो भी मेरे अंदर चल रहा है, जो और कोई नहीं जानता, गुरु सब कुछ जानते हैं। तो ये भाव रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और तीसरा गुरु के आदेशों के साथ सदैव कैसे जुड़े रहे। तो इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि गुरु सदैव मेरे साथ है, गुरु कभी मेरे से अलग नहीं है। तो मुख्य रूप से तीन चीजें बताएं। It's like Guru Maharaj left physically over a year ago, right? And during my travels all over the world, when I met some, and I'm sure they did not tell me also that they're still feeling the pain of being separated from Guru Maharaj. They cannot take it. It's so painful for them. Every day, he says, there's never a day that I never felt that pain. That that the pain is always there. I never considered it is painful. So that means they're always thinking of Guru Maharaj. That means Guru Maharaj is always there with them. और एक प्रूफ पर ये भी है कि जितना विरह का भाव होगा उतना वास्तव में गुरु के साथ होंगे। आगे बताया कि क्योंकि मैं गुरु महाराज से पहले काफी ट्रैवल करता था और अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कई भक्तों को ऐसा मिला कि गुरु महाराज को अपने हुए तो 1 साल से ऊपर हो गया है, परंतु फिर भी कई भक्त ऐसे हैं जो आज भी हर रोज महाराज से विरह अनुभव करते हैं। हर रोज गुरु से विरह अनुभव करने का अर्थ हुआ वास्तव में गुरु के साथ है। इसका मतलब हर रोज गुरु के साथ है। And this will go on for the rest of their life. और ये पूरा जीवन चलेगा। It will not go away because our Guru Maharaj is so special. I mean, all the gurus are special, but our Guru is so unique in that way. And it should be, the mood of the disciple, it should be always like that. Whether they're physically present or they're not here anymore, should be always feeling that their spiritual master is with them. The disciple should always think like that. शिष्य का सदैव ये मूड होना चाहिए, चाहे गुरु फिजिकल सेंस में हमारे साथ हो या नहीं हो, पर शिष्य को सदैव इस सोचना चाहिए कि गुरु मेरे साथ है। And if we think like that, and if our meditation is always like that, then we'll make progress in Krishna consciousness. और यदि हमारा ऐसा भाव रहेगा तो फिर हम कृष्ण भक्ति में उन्नति करेंगे। और वैसे सभी गुरु उत्तम हैं, परंतु फिर भी शिष्य का भाव है कि मेरे गुरु है बहुत ही विशेष। That Vyasa Puja offering that I composed is a meditation for all the disciples of Guru Maharaj every day. If you copy that, if you posted it and you read it every day, that should be our mood. It's not just for me. No, you just have to change the word Janardan. There's a word there when he's calling me, when he says Janardan, right? You just change that and put your name in there. Remember that? Yeah? And that should be the meditation. It's in America they did it already. In one city, they made copies because I asked the leaders of the yatra, different zones of Guru Maharaj there, to read my offering. And there is one city they like it so much that they said it's a good meditation for all of us every day. And if you read it, it really it talks about you. Because one of the title is there, or subtitle is, I'm not a disciple. I'm not a disciple yet. I'm something like that, isn't it? तुम्हारे बोलने की जो मैंने व्यास पूजा ऑफरिंग पर गुरु महाराज को दी है, वास्तव में वो मेरी मेडिटेशन है, और केवल मेरी नहीं है, वो सब शिष्यों के मेडिटेशन है। उस व्यास पूजा ऑफरिंग में बस यहाँ पे जनार्दन नाम लिखा है, वाटा नहीं है, अपना नाम डाल दीजिए। तो और उसको हर रोज पढ़ें, हर रोज उसको रीड करें, क्योंकि उसका भाव यही है कि मैं क्या वास्तव में शिष्य हूँ, इसकी भाव है। तो अमेरिका में एक शहर में भक्तों को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसकी कॉपी करके सब भक्तों को भेज दी। तो सब शिष्यों को इसको हर रोज
पढ़ना चाहिए, व्यक्तिगत मेडिटेशन के लिए।